Hello students, welcome back to our another lecture. In this video lecture, we are going to discuss about the master culture, seed culture, working culture and preservation maintenance of industrially important strains. So let's start with the master culture. Master culture, it is a culture derived directly from the culture collection centers. Okay. Culture collection centers like ATCC. ATCC stands for American Type Culture Collection Center, which is located in the USA. The another example of culture collection center, it is AHU, which is located in the Japan. So master culture मतलब क्या, आप रेफरेंस कल्चर होता है जो एक वायल या फिर एम्पल में स्टोर किया जाता है, विच इज अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ द कल्चर, एंड देन दैट कल्चर आर फर्दर यूज्ड एज द सीड कल्चर और वर्किंग कल्चर और स्टॉक कल्चर. सो मास्टर कल्चर, ये एक, हम इसे अगर सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो इट सर्व्स एज द इन हाउस रेफरेंस स्टैंडर्ड. मतलब it consists of the different types of the culture collection. There are different types of culture and all cultures are available in the pure form, and further this master culture are used to prepare the stock culture and then used for the different practical purposes or different production purposes. Next is the next is the seed culture. Now what are seed culture? It is the starter culture. Starter culture is a microbial culture which actually performs fermentation. मतलब मास्टर कल्चर से हम सीड कल्चर ऑब्टेन करते हैं और जो इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज किया जाता है. सीड कल्चर और वर्किंग कल्चर इज समवॉट सिमिलर एंड रिलेटेड टर्म्स टू ईच अदर. In working culture, what happened? The culture which is subcultured from the master culture onto the Na plates or Ma plates or different media plates or different slants, and they are stored for further use, is referred to as the working culture. मतलब क्या है, हमने master culture से full culture लिया and we inoculated into or we have streaked into the Na plates or different media plates, and that plates are allowed to इंक्यूबेशन एंड देन वी हमें नंबर ऑफ कलेक्शंस मिलते हैं, नंबर ऑफ कॉलोनीज मिलते हैं, और फिर वो वर्किंग कल्चर एज अ इनोक्यूलम या फिर फर्दर प्रैक्टिकल पर्पसेस या इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. मतलब मास्टर कल्चर को हम प्रिजर्व करेंगे एज अ वर्किंग कल्चर, एंड देन जो वर्किंग कल्चर में हमें ग्रोथ मिलेगी वो हम प्रैक्टिकल या प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज करते हैं. सो दैट इज द वर्किंग कल्चर, मास्टर कल्चर एंड सीड कल्चर. Okay, so it all starts from the master culture because it's a collection house, collection center of the different cultural samples or different culture. It is the collection of the different cultures. So that has been there. Next comes preservation and maintenance of the industrial strains. हम कैसे प्रिजर्व करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, that we are going to see. अब जब हम इंडस्ट्रियल स्ट्रेन की बात करते हैं, उसका सिनोनिम है प्यूरिफाइड कल्चर और प्योर कल्चर. प्योर कल्चर मतलब क्या? प्योर कल्चर इज डिफाइंड एज अ कल्चर ऑब्टेन फ्रॉम द सिंगल सेल और सिंगल स्पोर. ओके, दैट इज नोन एज द प्योर कल्चर. तो ये प्योर कल्चर यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सर्टन प्रोडक्ट्स. ओके, so it is very important to preserve and maintain this pure culture. Okay, because we want number of colonies, we want larger population of our bacteria, we want large population of our desired microorganisms. So it is very important to preserve that culture. So how you are going to preserve that culture? To maintain the pure culture for extended periods in the viable condition or in the living condition without any genetic change or without any disturbance is referred to as preservation. Okay, वो microorganisms की जो genetic ability है या फिर जो भी वो स्ट्रेन है उसमें कोई एनाटॉमिकल, कोई मार्फोलॉजिकल चेंज नहीं होना चाहिए, कोई फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं होना चाहिए. तो ये चेंज कब नहीं होगा? जब हम उसे प्रिजर्व करेंगे, प्रॉपरली प्रिजर्व करेंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू
प्रिजर्व द कल्चर्स वो नीड बन चुकी है. ओके, प्रिजर्वेशन इज द नीड for maintaining long term microbial culture. So there are generally two methods are been there, short term method and long term method. We will discuss first about the short term method. Now in short term method जो first technique है, it is the periodic transfer to the fresh media. Now what happens in this first method, कल्चर मेंटेन किया जाता है पीरियोडिकली. ओके, हाउ इट इज बीन मेंटेन पीरियोडिकली? पीरियोडिकली मीन्स टू अ सर्टन पीरियड. ओके, मतलब एक सर्टन पीरियड के लिए कल्चर हम मेंटेन करते हैं बाय प्रिपेयरिंग अ फ्रेश कल्चर फ्रॉम द प्रीवियस स्टॉक कल्चर. ओके, मीन्स व्हाट, कुछ माइक्रोब्स वाइबल होते हैं फॉर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि दे रिमेन वाइबल फॉर सेवरल वीक्स, or some microbes remain viable for several months. So according to that condition we have to preserve that microorganism. Okay, तो हम कैसे preserve करेंगे? master culture से हम we will take a loopful culture, we will streak onto the plate. Okay, वो master culture का हम working culture करेंगे, and then from the working culture we will streak on different type of media. That organism will streak on the different type of media and allowed to incubate. इस तरीके से हम culture preserve कर सकते हैं depending on the condition of that microorganisms. Okay, so this is very advantageous method because it is very simple method. Just you take the loopful culture and streak, and there is no any, इसके लिए कोई special apparatus की ज़रूरत नहीं है. आपको सिर्फ Na plates चाहिए होते हैं and aseptic conditions मेंटेन करनी होती है. इसका डिसएडवांटेज ऐसा है कि एज इन दिस मेथड वी सिलेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच रिमेन वाइबल फॉर वीक्स और फॉर अ मंथ्स. ओके, सो इसकी वाइबिलिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू दैट पीरियड. ओके, वंस आपने ऑर्गेनिज्म स्ट्रिक किया है और रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर दिया है, वहाँ पर आपका काम ख़त्म नहीं होता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक द वाइबिलिटी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो ऑर्गेनिज्म वाइबल है या नहीं, अपनी एक्टिविटी दिखा रहा है या नहीं. तो फॉर दैट यू हैव टू डू द पीरियोडिकली टेस्टिंग, और अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्गेनिज्म आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है टू चेक द वाइबिलिटी. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड इज द प्रिजर्वेशन ऑफ बैक्टीरिया यूजिंग glycerol. Now what happens in this? Bacteria can be frozen in 15% glycerol. Glycerol, it is the viscous fluid. तो बैक्टीरिया फ्रोज किए जाते, फ्रीज किए जाते, सॉरी नॉट फ्रोज, फ्रीज किए जाते हैं यूजिंग 15% ग्लिसरॉल. नाउ ग्लिसरॉल डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता बिकॉज इट इज वेरी विस्कस फ्लूइड. द ग्लिसरॉल इज डाइल्यूटेड टू certain amount, means to 30%, and then equal amount of glycerol plus your culture broth are mixed into the tubes and then they are frozen at -10 degree Celsius. मतलब आपका diluted glycerol और आपका culture broth और nutrient broth, this both content are been mixed and allowed to freeze at -10 degree Celsius. Okay, then viability of organism varied such as E. coli और डिप्लोकोकस निमोनी एक्सेट्रा, दिस आर वाइबल फॉर दी 5 months. और फिर आपका ऑर्गेनिज्म वहाँ पर इनोकुलेट किया जाता है. ई कोलाई और डिप्लोकोकस निमोनी, अगर आपको ई कोलाई या डिप्लोकोकस निमोनी स्टोर करने हैं, प्रिजर्व करने हैं, तो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, डाइल्यूटेड ग्लिसरॉल विद द कल्चर ब्रॉथ. और ये ऑर्गेनिज्म ई कोलाई और डिप्लोकोकस निमोनी वाइबिलिटी एक्टिविटी दिखाते फॉर दी 5 months. मतलब by using this technique, E. coli and Diplococcus pneumoniae can remain viable, can show their activity up till 5 months. So this is about the glycerol. Next storage method is by the drying method. Drying method में दो types है, paper disc और gelatin disc. Okay, so these are two methods. In gelatin disc what happened? A drop of the bacterial suspension is taken. Okay, drop of the bacterial suspension in the gelatin are placed onto the sterile petri plates and then they are dried under the vacuum. Okay, to preserve the culture. मतलब bacterial suspension लिया जाता है
into the gelatin, and that gelatin is placed onto the sterile plastic petri plate. Gelatin, it is the semi solid component. और फिर that culture is allowed to incubate and then dried under the vacuum. Different special types of vacuum are being used in this technique. So this is all about the short term methods. Short term method means for the we can say for several weeks to months we can store our culture. मतलब शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए आप कैसे कल्चर स्टोर कर सकते हैं, कैसे कल्चर प्रिजर्व कर सकते हैं, वो टेक्निक्स हमने अभी देखी. नाउ फर्दर वी आर गोइंग टू से लॉन्ग टर्म मेथड्स. लॉन्ग टर्म मेथड्स में आप आपका माइक्रोबियल कल्चर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, वो अब हम आगे की टेक्निक में देखेंगे. सो लॉन्ग टर्म मेथड्स इंक्लूड, first is mineral oil or liquid paraffin storage. Okay, now in this method what happened? In this method, sterile liquid paraffin, it is also viscous fluid. Okay, so in this method, sterile liquid paraffin is poured over the slant culture of the microbes and allowed to store upright at room temperature. Means what? एक टेस्ट ट्यूब लीजिए आप. ओके, उस टेस्ट ट्यूब में या फिर बम्पर ट्यूब लीजिए या फिर स्क्रू कैप ट्यूब्स लीजिए, एंड दैट ट्यूब्स मस्ट बी स्टेराइल. fill that tubes with the sterile liquid paraffin, okay, up to the certain level. और फिर sterile liquid paraffin ये क्या किया जाता है, स्लांट कल्चर में, स्लांट कल्चर द कल्चर मतलब जो स्लांट्स होते हैं वहां पर, उसके ऊपर ये लिक्विड पैराफिन, स्टेराइल लिक्विड पैराफिन पोर किया जाता है. और दिस ट्यूब्स is been allowed to store at room temperature in the upright position, in the straight position. Okay, whereas culture can also be maintained by covering agar slants by sterile mineral oil. Okay, the first was sterile liquid paraffin और secondly आप sterile mineral oil भी use कर सकते, and then allow that tube to incubate at room temperature at 0 to 5 degree Celsius. But if room temperature is not in that condition, then you have to go for the freezing. Okay, so this is the use of mineral oil or liquid paraffin storage. तो इस मेथड से bacillus can be preserved for 8 to 12 years. Means you can see that this method is very we can say very prospective method for the further use. So bacillus 8 to 12 years अपनी viability preserve कर सकता है by using this technique. Okay, so it limit the oxygen excess that reduces microorganism metabolism and growth, as well as to cell drying during preservation. This is a very long term method for the preservation. Next is the storage in the saline suspension. ये बहुत commonly used method है. Sorry. What happens in this method? Bacterial culture is preserved in 1% salt concentration in screw cap tubes to prevent evaporation. Normal saline it consists of the NaCl component or you can say salt component. तो bacterial culture ये 1% salt में, मतलब अगर 100 ml of water है तो 1 gram of salt आप उसमें add करेंगे, which creates your 1% salt concentration. Okay, so that is been stored in the screwed cap tubes, sterile screwed cap tubes to prevent the evaporation. Definitely salt ये बहुत, salt is the volatile component, so it is necessary to tight that tube. So the screw cap tubes are being used to prevent the volatility, to prevent the evaporation. The tubes are allowed to store in room temperature and whenever you need, you can transfer it into the agar slant. Okay, तो सिर्फ इतना important है कि culture preserve किया जाता है into the 1% salt concentration in the screw cap tubes. Next is the lyophilization. Lyophilization means what? यहाँ पर freeze drying किया जाता है. Okay, the culture is allowed for the freezing at the temperature of 4 degrees Celsius, which is the temperature of the refrigerator or freeze. Next technique is cryopreservation. Now in cryopreservation मतलब क्या है? Cryopreservation means it is the freezing process in which liquid nitrogen at -196 degrees Celsius or in the gas phase
लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना है -196 डिग्री सेल्सियस, और इन द गैस फेज अबाउ द लिक्विड नाइट्रोजन -150 डिग्री सेल्सियस इज अलाउड टू इंक्यूबेट, मतलब यहाँ पर फ्रीजिंग किया जाता है. दिस प्रोसेस इट हेल्प्स इन द सर्वाइवल ऑफ द प्योर कल्चर प्लस प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर फॉर लॉन्ग स्टोरेज टाइम. मतलब इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे तो इस मेथड में क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फ्रोजन. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द कल्चर आर फ्रोजन इन लिक्विड नाइट्रोजन at -196 degrees Celsius in presence of glycerol and DMSO, glycerol और DMSO. okay, आइदर आप ग्लिसरॉल यूज कर सकते हो या फिर डाइमिथिल सल्फोक्साइड यूज कर सकते हो, विच प्रिवेंट द सेल डैमेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स एंड प्रमोट द सेल सर्वाइवल. मीन्स इफ द bacterial cultures are unable to tolerate the freezing condition but they require that type of temperature, so in that condition you go for the cryopreservation, means you provide the liquid nitrogen at -196 degrees Celsius with the help of this stabilizing agent like glycerol. Stabilizing agent क्या करता है, it helps to stabilize the microorganism, मतलब genetic material उस microorganisms के disturb होते नहीं है, it remain according to the condition जो already उस microorganisms के थे. So this is the technique of cryo preservation. So these are two methods, short term methods and long term methods, which are required for the preservation of the certain microorganism for further use, for further perspectives. Okay, so that's it. Thank you.